इंडिगो टाइटल that was selected by whom? किसके द्वारा सेलेक्ट किया गया था ये टाइटल? What was the name of the author? Louis Pasteur. This title was selected by Louis Pasteur. इंडिगो नेम एक्चुअली क्या था हिस्टोरिकली, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नील टी कहते हैं। हमारी इंडियन लैंड को पास में क्या कहा जाता था? गोल्डन स्पैरो, बिकॉज ऑफ इट्स फर्टिलिटी, क्योंकि हमारे भारत की भूमि क्या थी? द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। पूरे देश की सबसे ज्यादा उपजाऊ जो भूमि थी वो हमारे भारत की भूमि थी, इसलिए पूरे देश और दुनिया की नजरें होती थी, स्पेशली इन 19th and 20th सेंचुरी पीरियड, 19वीं और 20वीं शताब्दी के पीरियड में। और इससे भी पहले की बात करें तो 1600 में पुर्तगाली भारत में एंटर कर चुके थे। वो पुर्तगाली नागरिक जिसका नाम वास्को डी गामा था, 1798 में उसने भारत की खोज की। इंडिया वाज India was discovered by Vasco da Gama in 1498. India was discovered by Vasco da Gama in 1498. अब देखिए इसी टाइम से ही विदेशी कंपनियों का भारत में आना शुरू हो जाता है। पुर्तगाल के लोग आ गए, फिर डच लोग आ गए, फिर फ्रांस के आ गए, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई। 1498 से लेकर के 1600 तक का टाइम विदेशी अंग्रेजी कंपनियों के भारत में आने का रहा। कितने 100 साल का टाइम हो गए? 102 साल हो गए। 102 साल हो गए। तो विद इन दिस टाइम दे स्प्रेड आउट देयर बिजनेस, उन्होंने अपना बिजनेस स्प्रेड आउट किया। हाउ डिड दे स्प्रेड आउट देयर बिजनेस? कैसे फैलाया उन्होंने? बाय एस्टैब्लिशिंग देयर डिफरेंट कंपनीज इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इन नॉर्थ, इन ईस्ट, इन वेस्ट एंड इन नॉर्थ। इन नॉर्थ East India Company came in Delhi in 1600. So India was covered by them. India was covered by foreigners. Totally it was covered by them for spreading out their business. It was the great power of England and Britishers. Through the language, they tried to rule over the world. Just by their language. It was the power of their language at that time. So British language is very common today. We read British language. All the colonies of South America and Asia, they use British language. We read in the history after 1990. The USA, the America became the king of the world. America was defeated in Second World War. America was defeated in Second World War after 1945, and the USSR became winner of the war up to 1990. We will read this thing in modern history period. It happens in modern history period. But now America is veto power due to its American language, especially due to its American language. The USA invented this language and addressed to the worldly people for showing the importance of time. They had less time but more progress. Less time
using all over the world. In modern history, we read these things. But when we go back in the history of the Britishers, all over the world Britishers ruled over except Nepal. In 1600, they tried to establish their companies in India. Indigo, it was the precious crops that they produced in Indian soil. They established industries. Money and more productive things were available. Manpower also was commonly available here. So they invested a lot of money in India in industrialization. The most fertile land of India was occupied by Britishers. In Maharashtra, in Gujarat and Bihar, these were the states where there was the fertile land, where there was the possibilities for starting manufacturing industries like cotton industry and other kind of industries. In the field of agriculture, industry, transportation, communication, railways, post offices, defense. In every sector, there was the possibilities. That's why they invested a lot of money in India. It happened here usually in 19th and 20th century. When we enter in 19th and 20th century period, it was a time of revolution in industrialization. So the literature of this time was totally influenced by the history. Actually, history tells us dates. Just it tells dates. What was, when was, where was, how was, why was. These things expressed by history. But literature tells us what should be. If there is a problem of poverty, problem of unemployment, how we can solve the problem? Solution is available in the literature. The literature of 19th and 20th century period was written by such historians, novelists, dramatists, those who were influenced by the historical events and incidents. What happened in 1526 in India? First Battle of Panipat. There were First Battle of Panipat. Second Battle of Panipat, it was in 1556. And third was in 1761. In this time, there was a time of battles, wars, conflicts, controversies, economically, politically, socially, at every level, from 16th century to 19th century period. We see a lot of changes, oceanic changes in our Indian economy. In 19th and 20th century period, just in the beginning of the 19th century period, what happens in India? What remarkable change brings in India?
There was a huge production, exploitation as well. Slavery system was common in practice. Injustice was common at the time. There was the exploitation of the poor people, rejected people of the society. They were mistreated at that time by the Britishers. Ultimately, Indians started first battle in the time of 1857. भारत ने पहला प्रयास कब किया अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए? 1857 में। कब किया? 1857 में। Just after 6 years, we read there was the birth of Swami Vivekananda in 1863. There was the birth of Mahatma Gandhi in the same decade in 1869. Where? In Porbandar, Gujarat. Just after a few years, there was the establishment of Congress in 1885. In the next decade, Swami Vivekananda went to the US in 1893 for addressing the worldly people, for addressing, appealing, advocating about the Indian culture. Our Indian culture is the representative culture of the world. He addressed to the worldly people this thing in that religious conference where there were a lot of people, those who belong to the different fields, like doctors were there, engineers, and they did know about the power of India. They did know about the culture of India. Initially, in 20th century period, we read that there was the rise of two groups. One was extremist and second one it was moderate. नरमपंथी और गरमपंथी देश की आजादी के लिए आवाज उठाने लगते हैं. और at that time in 1914 to 18, it was the time of First World War. It was the time of First World War. Italy and Germany, these countries were responsible for the First World War according to the imperial states. According to the imperial states. So ultimately they started establishing Nazism and Fascism. Fascism and Nazism in 1933. So there was the starting of Second World War in 1938 to 45. Leave it anyhow. Let us go through Indigo. Do you have? Please. So these are the historical changes. These are the historical changes. We'll read from 15th century, 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, then 20th century, and now it is 21st century period. A lot of changes we feel according to the sequence of the decades. By the changing of the centuries, it comes due to incidents, events, historical events. Due to historical events, it brings change. हर दशाब्दी में, हर सेंचुरी के अंदर ये जो परिवर्तन आते हैं, जो लिटरेचर में चेंज आता है, वो किसकी वजह से आता है? किसके कारण आता है? घटनाओं की वजह से. ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं, इंसिडेंट्स होती हैं, उनकी वजह से लिटरेचर में भी बदलाव आता है, लोगों की सोच के अंदर भी चेंजेस आते हैं. तो कल हमने रीड किया, एक पर्सन केम टू गांधी जी के पास एक पर्सन आया जिनका नाम क्या था?
इंडिया में जो स्पिरिचुअलिज्म की ताकत इतनी महान है, 365 दिन 365 डेज, अगर भारत हर दिन को एक फेस्टिवल के रूप में मनाता है तो भारत के दिन, टाइम, महीने छोटे पड़ जाते हैं। इतनी बड़ी स्पिरिचुअलिज्म की, फेस्टिवल्स की पावर इंडिया के अंदर है, क्योंकि हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उसका कोई मैसेज है। अगर हम 365 डेज रोजाना एक नया फेस्टिवल बनाएं तो फेस्टिवल बढ़ जाएंगे और टाइम शॉर्ट रह जाएगा। मेरी छुट्टी होगी। क्योंकि our Indian land is known as the land of starters, है ना? Multi-culture, multi-linguist, बहुभाषी ज्ञाता, बहु संस्कृति वाला देश अगर कोई है तो कौन सा है? भारत देश। ये भारत की सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिज्म की ताकत है, भारत की ये सबसे बड़ी अध्यात्म की ताकत है, जिसके द्वारा भारत देश और दुनिया में पहचान रखता है। अब राजकुमार शुक्ला ने अपनी प्रॉब्लम रखी गांधी जी के सामने। राजकुमार शुक्ला ने अपनी प्रॉब्लम रखी गांधी जी के सामने कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। गांधी जी ने उसको क्या रिप्लाई दिया? गांधी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to the other parts of India. कानपुर के अंदर भी उनको अपॉइंट किया जा चुका था और कमिटेड किया गया था कि वे इंडिया के अंदर उस स्थानों पर ले जाएंगे। शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला ने उनको हर जगह पे accompany की। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. अहमदाबाद के नजदीक वे अपने आश्रम के अंदर रिटर्न हुए। शुक्ला followed him to the ashram. शुक्ला ने उनको आश्रम की और पीछा किया, वे पीछे। For weeks he never left Gandhi's side. कई सप्ताहों के लिए उन्होंने गांधी जी के पक्ष को नहीं छोड़ा, गांधी जी के ही पक्ष में रहे। फिक्स ए डेट ही बैक और उन्होंने उनसे माफी मांगी कि वो कोई ना कोई डेट तय कर दें। Impressed by the sheer purpose, tenacity and story, गांधी जी said. शेयर purpose की जो tenacity थी, उनसे प्रभावित होकर के गांधी जी ने कहा, I have to be in Kolkata on such and such a date. मुझे इस तारीख को कोलकाता में आना ही पड़ता है, मेरी मजबूरी है। Come and meet me, आप मुझे मिलो and take me from there. और आप मुझे वहाँ मिलेंगे। Months passed, महीनों बीत गए। Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. कलकत्ता में जो स्थान चुना गया था, शुक्ला भी वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं। When Gandhi arrived, जब वहां पर गांधी जी पहुंचे, he waited, उन्होंने वहां पे इंतजार किया till गांधी was free, जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए थे तब तक उन्होंने वहां पे उनका इंतजार किया। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. तब उनमें से पटना की सिटी के लिए दो ने तो बिहार में जाकर ट्रेन को पकड़ लिया
ट्रेन में सवार हो गए। देव शुक्ला led him, वहां पर शुक्ला ने उनको लीड किया टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, एक वकील के घर की ओर। नेम राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम लॉयर का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद, who later became president of the Congress Party and of India। बाद में वो कांग्रेस पार्टी भारत के प्रेसिडेंट बन गए, इंडिया के और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। Who was the president of Congress in India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद was out of town। राजेंद्र प्रसाद क्या कहाँ थे? टाउन से बाहर थे। But the servants knew, परंतु सर्वेंट्स को पता था शुक्ला as a poor human who pestered their master to help the indigo sharecroppers। इंडिगो जो शेयरक्रॉपर्स थे उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने मांग रखी। सो इसलिए they let him stay on the grounds, उन्होंने उनको उन्हीं के धरातल पर छोड़ दिया with his companion, जिस भी कंपेनियन के साथ वो थे, जो उनके साथ मित्र उनके गए थे। गांधी whom they took to be another peasant, गांधी जी ने उनको इस तरीके से ट्रीट किया जैसे कि वो उनके दूसरे कोई पीजेंट हैं, उनसे मिलने वाले के दूसरे किसान हैं। But Gandhi was not permitted to draw water, परंतु गांधी जी को वाटर ड्रॉ करने की परमिशन नहीं थी। कहाँ से? From the well, कुओं से। Last some drops from his bucket pollute the entire source, कहीं उनकी बकेट से पूरा पानी प्रदूषित ना हो जाए। यानी अभी भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वहां पे था। अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना को पहले विरोध कर चुके थे। तो ऐसा ट्रीटमेंट उनको हताहत करता है, टॉर्चर करता है, जो कि पहले वो ऐसी प्रैक्टिसेस साउथ अफ्रीका में भी देख चुके थे और भारत में आकर उनको ऐसा ही मिलता है। हाउ डिड दे नो, वो कैसे जान सकते थे? वो कैसे जान सकते थे कि he was not an untouchable, कि वो एक अनटचेबल नहीं था? उनको इस बात का कैसे पता चल सकता था कि वो भी अनटचेबल नहीं था? गांधी decided to go first to मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया, which was an route to चंपारण। ये चंपारण की ओर से रूट जाता था। To obtain more complete information about conditions, इन कंडीशंस के बारे में और भी ज़्यादा पूरी जानकारी हासिल करने के लिए, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, बजाय कि then शुक्ला was capable of imparting, जिसे कि शुक्ला प्रदान करने में इनकेपेबल था, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे शुक्ला इम्पार्ट करने में सक्षम नहीं था, कैपेबल नहीं था, तो वो इंफॉर्मेशन उन्हें बाहर से प्राप्त हुई। He accordingly sent a telegram, और इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा। किसको भेजे टेलीग्राम? टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी। What was his name? J.B. कृपलानी of the Arts College in मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे ये, जिनको उन्होंने टेलीग्राम भेजा। किसने टेलीग्राम भेजा? Who is he here? गांधी जी, whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल।
जिन्हें कि वे अपने टैगोर की शांति निकेतन स्कूल के अंदर देख चुके थे। The train arrived at midnight. मिडनाइट को हमें ट्रेन पहुंची और ये टाइम की डेट थी 15 अप्रैल 1917। टाइम क्या था, डेट क्या थी, मिडनाइट का टाइम और डेट थी 15 अप्रैल 1917। आप समझते हैं, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर कि देयर वाज द स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। Kripalani was waiting at the station with a large body of students. बहुत बड़े स्टूडेंट्स की भीड़ के साथ